empirical evidence on strong form of efficient market. स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट बारे में हमने ऐसा समझा था दैट्स द इनसाइडर ट्रेडिंग इज हाईली पनिशेबल, इसलिए nobody will be able to take advantage of the secret information and nobody will be able to make superior profit out of it. According to efficient market theory, all available information, public or private, is reflected in the stock prices. This represents an extreme hypothesis. To test this theory, the researcher analyzed returns earned by the certain groups, namely corporate insiders, specialists in the stock exchanges, mutual fund managers who have access to the internal information and which is not publicly available or possess greater resource or ability to intensively analyze the information in public domain. They suggested that the corporate insiders having access to the internal information and the stock exchange specialist having monopolistic exposure earn superior rate of return after adjustment of the risk. तो उन्होंने ऐसा देखा that say they are able to earn the superior rate of return say in the market, ऐसा उनका कहना है. Mutual fund managers do not on average earn a superior rate of return. No scientific evidence has been formulated to indicate the investment performance of professionally managed portfolio as a group has been any better than randomly selected portfolios. तो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स का सुपीरियर रिटर्न नहीं है ऐसा उनका कहना है. दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ द बर्टन मैकलिन in his random walk down Wall Street, New York. Next, challenges to efficient market hypothesis. तो efficient market hypothesis practically successful नहीं होगा, उसका कुछ reasons उन्होंने दे रखा है. A is information inadequacy. Second is limited information processing capabilities, irrational behavior, monopolistic influence, so पहला limitation ये है information inadequacy. Information is neither freely available nor rapidly transmitted to all participants in the stock market. तो information सबको like fast मिले ऐसा होता नहीं है, ऐसा उसका limitation उन्होंने बताया है. There is a calculated attempt by many companies to circulate misinformation. तो कई कंपनीज का जानबूझ के से वो लोग इंफॉर्मेशन गलत स्प्रेड करते हैं. लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है देन एज अ ह्यूमन बीइंग से मैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन एकदम अच्छी तरह से प्रोसेस करूं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा उनका कहना है. ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आर शार्पली लिमिटेड. तो वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस कर सकता है. According to Herbert Simon, every human organism lives in an environment which generates millions of new bits of the information every second, but the bottlenecks of the perpetual apparatus does not admit more than 1000 bits per second and possibly much less. यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन सब कंपनीज के बारे में आ रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू say practically able to process all of them and I will be able to reach to the correct decision. That is what it says, and that is very much practically correct.
कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले वो टेक्निकल नॉलेज होना और उसके लिए टाइम होना और उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करना, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए उन लोगों का कहना ऐसा है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस प्रैक्टिकली प्रिवेल नहीं कर रहा है एंड देयर इज इन इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। David Derman maintained that under conditions of anxiety and uncertainty, with a vast interacting information grid, the market can become giant. Irrational behavior. It is generally believed that investors rationally will ensure a a close correspondence between the market prices and the intrinsic value. But in practice, this is not true. तो थियोरेटिकली ऐसा कहा जाता है कि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, वो दोनों सेम होता है, बट इन प्रैक्टिस ये सही नहीं है। J.M. Keynes argued that all sort of the consideration enter into the market valuation, which is no way relevant to the prospective yield. तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्राइस को टेक्निकली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो भी उसको इफेक्ट करता है। This was confirmed by, say, L.C. Gupta, who found that, say, the market evaluation process worked haphazardly, almost like a blind man firing a gun. The market seems to function largely on hit or miss tactics, miss tactics, rather than the basis of the informed beliefs about the long-term prospects of the individual enterprise. Monopolistic influence. A market is regarded as highly competitive. No single buyer or seller is supposed to have undue influence over the prices. तो efficient market में लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए. In practice, the powerful institution and big operators will great influence over the market. But practically ऐसा नहीं है. So कुछ segment या तो promoters of the company को जो direction में price of the security को move करना है, वो लोग move कर सकते हैं. The monopolistic power enjoyed by them diminishes the competitiveness of the market. तो उनके पास ये जो मोनोपोली है, उसकी वजह से efficiency of the market reduces and the market will become ineffective, inefficient, ऐसा उनका कहना है.